الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I invite Professor Dr. Sanavajan, President Pakistan Retina Society and the Director of Pakistan Institute of Community Ophthalmology for the welcome remarks. Thank you very much, Tariq, and greetings and good morning to all of you. Let me first acknowledge the presence of my mentors and teacher, Professor Mohammad Daud Khan. He was the founder of PICO and teacher of teachers of teachers. And Professor Shad Omar, my supervisor, I was trained by him in Lee Reading Hospital when I was doing my fellowship. So it is a great honor to be seated between two giants of ophthalmology. And Professor Ziaul Islam, of course, such a humble personality, is always there for you whenever you need guidance in ophthalmology or in your professional career. Thank you very much, sir, for being with us. Another giant in ophthalmology, Professor General Mazhar Ishaq Sahab. मज़र इसाक साहब के बारे में यही कहा जा सकता है कि जब आपको बड़े भाई का मशवरा चाहिए हो तो सर से मशवरा कर लिया करें। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी ऑप्थल्मोलॉजी के लोग हैं वो सब उनको ऐसे ही देखते हैं जैसे मैंने ये जुमला कहा, बड़े भाइयों की तरह। तो वो है तो जनरल लेकिन बड़े ही हम्बल, पोलाइट और ऑलवेज आपको स्माइलिंग। और जब भी आपने पेशावर में जब भी हमने इनको बुलाया ये जैसे ही बोला ठीक है, किस दिन ठीक है। तो वी आर सर ग्रेटली ऑनर्ड एंड आई एम पर्सनली obliged फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। हमारे तारिक खान साहब बैठे हुए वो पेशावर में खान है तो इसको हम होस्ट में डाल देंगे खान। और अक्सर हमारे कांग्रेसेस में हमारे पास भी तारिक खान है, तो दोनों के नाम भी मोहम्मद तारिक खान है। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि हम एक के साथ मरवत लगाएंगे। जब भी कोई कांग्रेस हो तो उसमें ये हमें लगाना पड़ता है। तो तारिक खान साहब एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हमारे लाहौर के। दीज आर बड़े हम्बल सोल और बड़े हम्बल तबीयत के मालिक है। सो वी वेलकम यू इन पेशावर सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर फैसल मुर्तज़ा इस कराची में बड़े हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान विद रेटिना सोसाइटी को, सो ही इज़ वन ऑफ आवर कोलीग देयर। उनको भी कराची का सबसे दूर है तो उनको सबसे ज़्यादा हम दिल से वेलकम करते हैं। और पेशावर बिल्कुल ये आते रहते हैं हमें पेशावर, बल्कि कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि मैं पेशावर हूँ, आप कहाँ हैं। तो हम कहते हैं फैसल पहले से बता तो दिया करो। तो फैसल थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर नदीम कुरैशी साहब, मेरे ख्याल में उनके लिए तो वो तारू जेंटलमैन वाली जो बात होती है ना सर, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्से पहले सर को एक हेल्थ इशू हो गया था, उसकी वजह से मेरे ख्याल में वो जब भी बीमार होते हैं ना तो अच्छा बंदा और भी हम्बल हो जाता है। तो सर की पर्सनैलिटी में भी उसी तरह चेंजेस आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए हमारे लिए पेशावर में। कुछ हमारे यंग, रिलेटिवली यंग, हो हम भी यंग हैं लेकिन वो रिलेटिवली यंग हैं। प्रोफेसर खाकान, प्रोफेसर कासिम लतीफ़, प्रोफेसर आमिर अवान साहब और नवीद कुरैशी साहब, ये मेरे ख्याल में हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑप्थल्मोलॉजी का स्टेज है ना, तो ये सब हमें वही हमारा जो फेस वैल्यू है ना इन्होंने बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल में ये हमारे लिए इनकी तरफ से एक हम गिफ्ट समझते हैं और दे आर एसेट्स टू रेटिनल ऑप्थल्मोलॉजी इन पाकिस्तान। So thank you very much for honoring this occasion and being with us.
Again, thanks to all the participants, my colleagues, Professor Ibrar Saab is here, Professor Mir Ali Shah, Professor Sadia, Dr. Tariq Khan Saab, Sir Nasir Saeed Saab, thank you very much, Sir Abai. And my colleagues, all the junior trainees, I hope you all will learn and enjoy together. Thank you very much. Thank you, sir, for the welcome remarks. Now we begin with the session, and the first will be the talk by Professor Dr. Tariq Marwat, and it will about the discovery of anti-VEGF, the discovery and the journey of. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone, and a very warm welcome to you all. It's truly a pleasure to be here and to talk to this esteemed gathering. So I will be talking about the history of the anti-VEGFs. I think out of all the innovations that we observed in the last 2-3 decades in the field of retina, the development of anti-VEGFs has had the most profound impact on our profession and on our patients' vision. These agents have fundamentally changed how we care for our patients. और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 2023 में the global anti-VEGF market was $24.7 billion with an annual growth rate of 3.9%. Before that, in 2022, in US alone, anti-VEGF cost was 12% of the whole Medicare budget. An estimated 2.7 million anti-VEGF injections were performed in only 1 year. And this number is expected to get doubled in the next 7 years due to the increasing elderly population and rising diabetes prevalence. How the journey started. Actually, in 1948, an ophthalmologist from Israel, the Isaac Michelson, he speculated release of a factor. He named it factor X by the retina in certain diseases. And he stated that it is capable of affecting the growth of vessels and metabolism of retinal cells. After then, in 1971, Fockman published that angiogenesis plays a vital role in tumor growth and metastasis. And anti-angiogenesis can restrict blood supply to a tumor, which can induce tumor regression. In fact, this theory of anti-angiogenesis is the foundation of current treatment modalities for many retinal diseases. This Fockman was actually a pediatric surgeon from Boston Children's Hospital in Massachusetts. He was also Jew. And then in 1983, a pathologist by the name of Harold Dworek, he isolated vascular permeability factor. And after then, Ferrara from Genentech company, he cloned, sequenced, and isolated VEGF. Later on, it was confirmed that VPF and VEGF are the same thing, same molecule. In 1993, Miller and colleagues demonstrated high VEGF levels in aqueous samples in non-human primate eyes in case of retinal vein occlusion. After then, Adamus found high VEGF levels in human patients suffering from PDR, NVIs, and CRBOs in the aqueous samples. Again, the same fellow, Napoleon Ferrara, developed VEGF antibodies, the precursor of the bevacizumab. The intravitreal injection of these VEGF antibodies regressed new vessels in non-human primates. After then, the Genentech initiated a trial in 1997 for the development of anti-VEGF molecule.
which was later named by Roche as Avastin. On 26 February 2004, Avastin got FDA approval for the treatment of colon carcinoma. Since it was postulated at that time that the full-length antibody might not cross the blood-retinal barrier, Genentech developed an antibody fragment which was a precursor of ranibizumab. Although at that time Genentech demonstrated its efficacy in the primates, non-human primates, but it was not experienced on humans. So another company by the name of iTech Pharmaceuticals took the lead. It introduced its drug by the name of pegaptanib, which was later on marketized by Pfizer with the name of Macugen, and it got approval from FDA on 17 December 2004 as the first anti-VEGF injection for ARMD. Then ranibizumab was proved to be effective, dramatically effective in ARMD patients, and that was proved by Anchor and Medina trials. For the first time, a treatment achieved improvement in vision. On 30th June 2006, ranibizumab got FDA approval. Later on, it was also approved in 2010 and 2015 for RVO and DME. Before, at least 1 year before the ranibizumab was approved, an ophthalmologist from Bascom Palmer Eye Institute by the name of Rosenfeld, he successfully treated ARMD with intravitreal bevacizumab, so that when ranibizumab was getting approval, bevacizumab was already in a widespread off-label use by ophthalmologists. After then, a renowned CAT trial actually demonstrated that ranibizumab and bevacizumab had similar efficacy for the treatment of neovascular ARMD. On 18th November 2011, aflibercept, developed by Regeneron Company and marketed by Bayer with the name of Eylea, got approval from FDA. Later on, it was also approved for DME and RVO. Currently, aflibercept is the only anti-VEGF approved for ROP. It was approved on 8th February 2023. Brodusizumab is another actor. It was marketized by Novartis with the name of Biovu, and it was approved on 8th October 2019 for neovascular ARMD after Hawk and Harrier trials. It was later on also approved for DME. But then some post-marketing reports highlighted the risk of drug-associated intraocular inflammation and vasculitis and retinal arterial occlusion, which tempered its use. Next is faricimab, which was developed by Genentech and marketized by Roche with the name of Vabysmo. It got FDA approval for ARMD and DME in 2022. Later on, it was also approved for RVO. Another actor is conbercept. Conbercept is already in use in China since 2013. It was developed by Konghong Biotech Company. There is a study going on in US with the name of Panda trial since 2020. And it is likely to get FDA approval maybe this year or next year. Another actor is tarcocimab, which was developed by Kodiak Company. It has a significantly longer half-life in vitreous in comparison to all other drugs. It provides sustained drug delivery, and only once in 6 months injection is needed. But unfortunately, the 2 trials on this drug failed to meet the primary safety endpoints. An increase in cataracts in
noted. Uh, Increase in cataracts was the complication. So this drug was actually stopped. The studies were stopped on 26 July 2023. Then another company with the name of Panoptica, working on a novel eye drops containing a tyrosine kinase inhibitor for the treatment of neovascular ARMD. In the phase 2 trial, 52% participants receiving once daily topical drug for 12 weeks did not need rescue with an intravitreal anti-VEGF. 88% patients experienced clinical improvement and stability in the disease. Another company with the name of Ocular Therapeutics is working on an intravitreal bioabsorbable hydrogel implant. Mainly the research is on a tyrosine kinase inhibitor, but the same implant can hold ranibizumab and aflibercept as well. This is designed to reduce the number of injections. Next is the port delivery system with the name of Susvimo. It was developed by Genentech and it got FDA approval in 2021. It was the first sustained release refillable ocular implant. But Roche recalled Susvimo from the market due to some manufacturing problems, which was causing unwanted drug leakage. Then comes the subretinal gene therapy. A company with the name of RegenX Bio is conducting its trial, which is in phase 2. It was a subretinal injection of a virus vector that encodes an anti-VEGF antibody, very similar to ranibizumab, and suprachoroidal delivery is also being tested in this regard. Then is the intravitreal gene therapy. It was developed by Adverum Biotechnologies. The study is the OPTIC study, which is in phase 2. And the neovascular ARMD patients are being treated with this gene, and it produces exactly a drug like an aflibercept. And there is an 85% reduction of annualized anti-VEGF injections being noted. The biosimilar technology is also under research. Biosimilar is a biological product that is very similar to the reference product in terms of safety, purity, and potency. But the cost is relatively much low in comparison to the reference drug. There are two drugs with the name of BioViz, and similarly they have been already approved by FDA. The reference drug in these two biosimilars is the ranibizumab. But there are other drugs are under research. Almost 45 different companies are working on biosimilars of anti-VEGFs. And many of the bevacizumab biosimilars have been approved by the FDA, not for eye use, but for other uses. So in conclusion, translation of VEGF from discovery to therapy revolutionized treatment of retinal vascular conditions. With increasing robust research, the future is bright for our fight against blindness. The future is as bright as your faith. Thank you. Thank you, sir, for the excellent talk on the discovery to therapy. History is very important to remember because we learn from the experiences and our history, and only then we can go forward. Whatever we are talking today and discussing today will be history for tomorrow. The next talk will be about the anti-VEGF role in diabetic macular edema by Professor Mazhar Ishaq sir.
Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Nawallah and his team for inviting us. It's always a pleasure and honor coming to Peshawar. And we were expecting to have some food last night, but we came this morning, so it's still due on. Just जब तक वो लगाते हैं तो मैं एक बात कर लूँ कि if we are going to talk about the तारिक बात कर रहे थे regarding the history. It's also very important to know कि किस तरीके से ये drug I still remember I was in 2004 in Wilmer Eye Institute और मैं वहाँ एक और मंथ अटैचमेंट पे क्या हुआ था तो वहाँ जब वेस्टर्न का पहले नाम भी हमने नाम ही नहीं सुना हुआ था क्या है तो उस वक्त एक जस्ट हिस्ट्री की बात करता हूँ तो वो उन्होंने कहा कि जी कि एट दैट टाइम इट वाज जस्ट थॉट कि जी ये जो Rosenfield है दैट वाज इन वेलकम पार्मा इंस्टीट्यूट इन बॉस्टन नीचे क्या नाम है फ्लोरिडा वो वहाँ में था तो उनका इंटरवीनस लगा रहे थे एंड वन ऑफ द माय पेशेंट वाज वो जो वहाँ एक डॉक्टर है महमूद शाह उसकी मदद थी एंड शी वाज डायबिटिक एंड ही टुक मी टू पीटर कैम्पिचारो हु वाज वर्किंग एट दैट टाइम उसने कहा कि should we give an intravenous injection to my mother because she's got diabetes and not getting better तो उन्होंने कहा कि intravenous के बहुत side effects हैं so we are thinking of starting using intravitreal and let's give her some dose and then so after about a month or so when they started giving intravitreal that's the end of 2004 or 2005 में so he sent the first intravitreal वहाँ से बना के from America अपनी मदर के लिए जो 6 हमने वहाँ से कोल्ड चेन जो आजकल बिल्डिंग शुरू हुई उस कोल्ड चेन से आ गई यहाँ एंड दैट वाज हाउ वी फर्स्ट यूज्ड इंट्राविट्रल एवास्टिन इन पाकिस्तान एंड दैट वाज प्रेजेंटेड इन 2005 बाय इन कैरोफ्ट 2005 में मोस्ट प्रोबेबली मैंने प्रेजेंट की थी एंड सिंस देन वी हैव बीन यूजिंग एवास्टिन एंड नाउ एज तारिक हैज सेड द हिस्ट्री इज गोइंग ऑन जो मुझे मज़ेदार बात मुझे बड़ी पसंद आई और जो तारिक ने मुझे फ़ोन किया कि आपने प्रेजेंटेशन मुझे कल भेज दें तो मैंने कहा माय प्रेजेंटेशन इज़ इन माय हेड तो आई विल ब्रिंग इट इन द मॉर्निंग एंड देन टॉक इट एंड बिकॉज उसकी रीज़न थी कि सुनाला ने मुझे कहा ना कि जब क्या लेक्चर देना है तो फर्स्ट थिंग इज किताबें नहीं बोलनी ठीक है ना किताबें नहीं बोलनी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना है तो वो बोलो वो फिर मैंने कहा 2-3 स्लाइड के आगे एक्सपीरियंस ही खत्म हो जाता है तो जस्ट वो आई विल जस्ट टेक यू अलोंग कि जी व्हाट इज एग्जैक्टली एंटी-VEGF विद डीएमई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट्स यूज्ड एंड दिस इज माय प्रेजेंटेशन इन 2014 या 13 की है जिसमें से मैंने निकाली है 2-4 फोटोग्राफ्स कि जी दिस इज व्हाट अप टू डेट इन 2015 में हुई थी वी आर नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट द क्लिनिकल लेकिन द still it is a western oil या anti-VEGF oil they are still the main therapy of मैंने जैसे बात की है the important चीज़ें आ गई हैं which are to be talked about efficacy and safety which is the nowadays I think so one of the topics is so I will just to skip all those things जो बाद में हम बात करेंगे and the understanding of VEGF pathway and everything is also very important aspect जिसको हमें देखना पड़ता रहेगा just to let you know, when we, as I told you that we were the ones who started off Avastin in Pakistan in 2004, end of 2004. And at that time when I was in Armed Forces, we had already started laser alone or with adjunctive intravitreal Avastin in treatment of DME. And that was one study which we started at that time. Then we also started our quantitative changes in DME on OCT following intravitreal Avastin. That is the moment when we got the OCT. जब पहली बार OCT पाकिस्तान में हमारे पास आई उसके बाद हमने ये वेस्टर्न लगा के उसमें देखा देन उसके बाद एक बार बड़ा शोर हो जाए कि ये वेस्टर्न के साथ कोई इंट्राओकुलर प्रेशर चेंज होता है तो वो हमने स्टडीज की एंड देन वी आल्सो यूज्ड इन अदर डिजीजेस लाइक ईल्स डिजीज व्हिच आर ऑल इंटरनेशनली प्रेजेंट हुई अच्छा ये तो बात आती है जो मोटी बात है जो भी हम जहाँ भी हम लगाते हैं ये मेरा वो एक प्रोटोकॉल है जो 2000 हमने 9876 मतलब उस शुरू में किया था आई थिंक सो द गुड थिंग अबाउट दिस थिंग वाज कि इट स्टिल होल्ड्स तो मुझे जो आज की खुशी है कि ये मेरी एक स्लाइड 2005-6 से चल रही है वो उसमें से जो है ना वो अभी तक चलती है
कि डायबिटिक पेशेंट जब भी आपको आएगा तो आपने हिस्ट्री उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन यूज ऑफ दिस थिंग कि HbA1c कितनी है. आई थिंक सो टेक होम मैसेज अगर मैं एक कहूँ कि हमारे जितने कितने पेशेंट्स अभी आते हैं जो आज नाइव टू ट्रीटमेंट, जिनको ट्रीटमेंट मिली नहीं होती लेकिन स्टिल दे हैव गॉट नो आइडिया कि उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है. मतलब डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं पता कि उसकी आंखें दायर होती हैं, इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट को हमें बताना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एनीवे बाकी ये सारा जब वो रिव्यू कर लेते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें जो मैं सबसे बताना जो चीज़ें हैं कि अगर जब आता है रेटिना क्लिनिक, बिकॉज वी जस्ट गोइंग टू स्टॉप ओवर ऑन द दिस थिंग कि वी हैव टू फाइंड, पहले हम FFA से करते थे लेकिन अगर आप फोकल और डिफ्यूज की बातें होती है एंड सेंटर इन्वॉल्व है, सेंटर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो चीज़ें आती हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ये वेस्टर्न इन DME में एंटी-VEGF का लगाना होता है. और उसमें बाकी बातें हैं कि ये हम ये करेंगे कि अगर सेंटर इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसका फोकल लेज़र कर देंगे, अगर सेंटर इन्वॉल्व है तो उसके इंजेक्शन लगाएंगे, 3 इंजेक्शन लगा के उसके बाद उसकी जरूरत पड़ेगी ग्रेड करेंगे और फॉलो अप विद OCT स्कैन आफ्टर 3 months. एंड अगर वीन बेटर हो जाएगी तो वी विल नॉट गो टू इंजेक्शन, अगर नो रिस्पॉन्स होगा तो विल स्टार्ट ऑन स्टीरॉइड्स. अगर सिस्ट वगैरह हो या AVMD हो या देन वी हैव टू काउंसल हिम बिकॉज दे विल नॉट इम्प्रूव. इसको अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूं, दिस थिंग वुड बी माय वे ऑफ ट्रीटिंग इज बैकग्राउंड रेट ऑब्जर्व करेंगे, DME बैकग्राउंड डायबिटिक विद नॉर्मल वेन ऑब्जर्व करेंगे. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन मार्क व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट लेटर ऑन कि अभी इसमें क्या आ रही है. GME with decreased vein है तो I will start them on intravitreal Avastin, any drug वो भी मैं भी बात करूँगी. 3 because this was a presentation when there was only Avastin or जब Ranitidine was just coming up in Pakistan. The 3 focal जरूर लगाऊंगा, grades जरूर लगाऊंगा. This is what the controversial thing part of it. And अगर refractory DME है तो along with anti-VEGF के साथ हम intravitreal triamcinolone लगाएंगे. और PDR वगैरह में हम उस ज़माने में कोई Avastin नहीं लगाते थे, लेकिन अगर दोनों में है PDR भी है और DME है तो we'll treat them with both of them along with laser and with injections. So this is what it is, and I'm going to discuss this thing in my talk and prove it over a period of time कि किस तरह से अभी तक ये हो रहा है. So basically for those who are just the trainees, अगर आपका MECLA on है the use in, और देखें एक चीज़ होती है clinical studies होती हैं और एक चीज़ होती है कि what is the practically being done. Giving an injection to this person is waste of time from my point of view. It may be a controversy, लेकिन I think so. Focal laser, having done lasers for last 30 to 40 years, I feel I still have got patients जिनके साथ laser के साथ बहुत सी treatment होती है, and if there's not there, you can still do this laser. There's a lot of controversies about this, लेकिन having seen even nowadays, my patients who have done laser in 1990s के lasers जो हैं 1995 के, they're still carrying on, and they're still having good gain. So there are a lot of things, and so इनको जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी प्रेजेंटेशन थी कि लेजर्स को भूलना जाओ, लेजर आर स्टिल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सो यू शुड हैव लेजर. इन जैसे केसेस में आपको कोई जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास इस किस्म में ना, दीज आर द केसेस जिनमें आपको सही सोचना पड़ता है कि क्या करना पड़ेगा. एक ज़माने में जब मैंने ये स्लाइड की थी उसमें यह था कि जी व्हाट आई वुड लाइक टू डू, इसमें आई वुड लाइक टू गिव इंट्राविट्रेल Avastin, Eylea और एनी ड्रग anti-VEGF 3 दे के, लेकिन the chances of improving it is because why this thing is there, and you may have to add even Avastin, triamcinolone in these cases, steroids, और जिस तरह the studies prove करेंगे कि इन cases में हम अभी किस तरह से वो prove किया. These are the difficult cases. On these cases जिसमें आपको ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन जब FFA had to go for anti-VEGF and along with it आपको क्या नाम है स्टीरॉइड्स भी लगाने पड़ेंगे. तो it is very important to count, to tell you exactly कि जी what is along with जो ये मैंने सारी बातें की कि लेज़र क्या यूज़ हो सकते हैं, क्या स्टीरॉइड सिर्फ anti-VEGF is only the answer, और थर्ड चीज़ है कि क्या anti-VEGF के साथ हम स्टीरॉइड्स ऐड करते हैं.
लेज़र ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द लास्ट जब हमने शुरू किया से अबाउट अर्ली 2000 से लेके वी हैव प्रूवन विद एनीथिंग कि व्हाटएवर वी आर सेइंग all of them are possible and all of the studies have proven it कि this is the way forward and we अगर आप जब bottom line of all presentations studies देखेंगे you have to find your own way for your own country what is the best for you. तो ये मैं अगेन मैं कह रहा हूँ कि लेजर्स इसमें सिर्फ जस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम जो इसमें ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जो है लेजर्स हैव शोन इट मे नॉट बी एज गुड एज ऑल द anti-VEGF but still it is a mainstay. There are a lot of studies in my group हम बात करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे cost of anti-VEGF is the सबसे important चीज़ जो हमें पूरी दुनिया में आती है at the moment alien in the western world cost about 2000 ranibizumab about 1000 and roughly veteran and about 50,000 पाकिस्तान में भी आपको सारों के prices का पता है they are all costs and so we are talking about the population of 250 million whether what is going to be beneficial and what it is that is the important thing to remember whoever can afford what I think so can use it but we have to look for those all people and I thought I will just share to you with all कि ये एक चीज़ बड़ी काउंट होती है कि which is the best drug कि western अच्छी है एलिया अच्छी है या रेनिविज़ुमैब अच्छी है तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दिस थिंग जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि ऑल हैव शोन कि जी के पहले महीने में जो भी इंजेक्शन आप लगाएंगे दे गिव अस सिमिलर रिजल्ट सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द थिंग बाकी उसके निटी ग्रिटी में ना है और रियल वर्ल्ड आउटकम में दोनों में है कि दे ऑल हैव शोन कि जी अगर सारी ड्रग्स जितनी भी जितनी मैंने स्टडीज कोट कर रहा हूँ इन सब में ये जो है ना शो करती हैं कि ऑल ऑफ देम आर वेरी इफेक्टिव सो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग कि और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है द लोडिंग डोज जो मैंने कहा था कि पहले हम 3 इंजेक्शन लगाते हैं आई थिंक सो दिस हैज बीन प्रूवन ओवर नॉट इन वन लॉट ऑफ papers and studies which have been proven that a loading dose is very important. So I would जब आप किसी को decide करते हैं I think so it is important to tell the patient straight away और उससे बड़ा clear cut बताएं along with whatever we have said कि जी initially अगर if the vision is good and if it's fine and you don't think so tell him the importance of the glycemic control and everything ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें बताना है और because it is not been passed on by our physicians brothers so it is very important that we should tell them कि जी अपना sugar control करें and 99% of जो मेरे patients हैं they are not well controlled in diabetics और HbA1c का 90% को पता ही कोई नहीं होता है कराना भी होता है so loading dose has been proven lot of studies के this thing है and then दूसरी चीज़ ये है कि जी this has also been proven about that कि जी आपने 3 इंजेक्शन लगा के आंखें बंद करके लगाने का तुक नहीं बनता आप उसको रीड चेक करें and it is not necessary कि आपके पास OCT होगी देखेंगे आप उसको देख लें vision can even along with you have to see whether the cataract कितना है नहीं है and if the vision is बेहतर है रेटिना में आपको चेंजेस नज़र नहीं आते and it is still a clinical unfortunately क्लिनिक से हम क्लिनिक यानी कि हम यूज़ ऑफ 90 diopter और वो हमने छोड़ के हम we have gone toward OCT I think so still it is very important imperative for all those who are training कि आप still 90% of the cases you can still diagnose if you have a look at very clearly with your 90 diopter and you can make out edema you can make out sarcinates you can make out हाँ aneurysms है so I think so in our country importance should not be go toward OCT it is more important to go towards कि जी आपकी basic investigations में क्या कर सकते हैं so you can always जितना आप treat and extend करेंगे diabetes में भी मतलब it is very common in age-related macular degeneration लेकिन इसमें भी बड़ा common आ जाती है तो what we have seen we have learned that हर drug जो है anti-VEGF drug improve करती है vision और जितनी विजन रिड्यूस है यानी कि जितना पेशेंट का विजन कम होएगी उतना ड्रग अच्छा इम्प्रूव करती है so, यानी कि जितनी विजन कम होएगी उतनी विजन इम्प्रूव करती है दिस इज आल्सो बीन और लेकिन स्टिल अर्ली ट्रीटमेंट को जो सारी स्टडीज आई हैं उसमें ये भी है कि अर्ली ट्रीटमेंट आल्सो हैज गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक अबाउट लेटर ऑन सो वी गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा कि इनिशियली आपकी दैट इज आल्सो एंड ओवरऑल के ट्रीटमेंट time is also important. तो ये चीज़ें जो है ना ये this has been come up with all. I'm not going to skip this protocol tea. I think so because I have come to know that we are going to talk about this as a panel discussion. So we're just going to leave this thing कि कौन सी drug अच्छी है. ये basically point है कि कौन सी drug अच्छी है कौन सी नहीं है तो उसको मैं छोड़ता हूँ. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ये protocol भी एक study है जिसने ये बताया कि जी
गुड विजन एंड सेंट्रल इन्वॉल्व विजन कि क्या अगर आपके पास एक पेशेंट है जो आप देखते हैं ओसीटी करते हैं, आप देखते हैं विजन उसकी गुड है, क्या उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यानी DME के फाइंडिंग्स हैं विजन गुड है ना, दिस इज मोर देन 60% ऑफ योर पेशेंट विल गो टू कम टू यू लाइक दिस. सो इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या आप ट्रीटमेंट करें. स्टडीज है काम आपकी चीज आपको करनी चाहिए बिकॉज ओवर 2 years ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इनकी विजन रिड्यूस हो सकती है. लेकिन इट इज अ बिट ऑफ अ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आपको ले जाना कि जी कौन से बेहतर है. इसमें ये भी देखा गया है कि फोकल लेजर हैज गॉट द सेम बेनिफिट. ये परसेंटेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आई थिंक सो important thing is you tell the patient before and to control his glycemic control, number 1. Number 2, you should tell him कि जी अपना आप रेगुलर चेकअप करें. एंड थर्ड, उसके बाद फिर आप उसे ऑब्जर्व करके और इफ इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑफ विद एनी ड्रग. दिस इज वन ऑफ द स्टडीज व्हिच हैव शोन कि जी ये प्रोटोकॉल बी में उन्होंने ये एलिया को यूज़ किया था, लेकिन दे आल्सो दैट कि जी आउट ऑफ ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द पेशेंट्स नीडेड इंजेक्शंस आफ्टरवर्ड. जो इवन एक लेज़र पे थे, एक लेज़र के बगैर थे, एक ऑब्जर्व कर रहे थे, एक को इंजेक्शन लगा रहे थे, तो देयर वाज अ चेंज इन दैट. अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक ब्रीफली अबाउट स्टीरॉइड्स. मतलब बिकॉज जब आप मैनेजमेंट ऑफ DME की बात करेंगे तो स्टीरॉइड्स में बिकॉज वी गॉट अ सेपरेट एंटिटी ऑन स्टीरॉइड्स. आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू इट. कि इम्प्लांट्स आ गए हैं, उसके मतलब बात अभी हमारी नेक्स्ट हो जाएगी. लेकिन रिमेंबर कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ आई वाज वेरी मच inclined of using steroids. I'm not talking about early 2000, and I presented this thing even at that time because at that time I came to know the inflammatory response in diabetes and also in Ease disease, which is my favorite topic. And we presented use of intravitreal triamcinolone in cases of Ease disease, and which turned out to. तो हमने उसी वक्त शुरू करा दिया था कि use of steroids in cases of asthma, and we didn't have anything, and we got very good results. So it is especially in those cases जिनमें आपके response नहीं आ रहा, उसमें steroids की use है, because we're going to talk later on, so I'm not going to go much onto it. Then again एक और जो बहुत important चीज़ है कि out of your treatment जितने भी हैं, they have turned out to be, जितनी studies आई हैं, they have shown about 40 to 60% will not have not good response in this patient. ये studies की मैं बात कर रही हूँ, मेरा personal data नहीं है कि 40. So आपको you should be mentally be prepared to have other things along with it, along with anti-VEGF, whether it is triamcinolone or whether you have got surgical options available there. And so combination therapy is definitely there, and there are a lot of studies which have shown protocol U है जिसमें have shown, जो मैं बात कर रहा हूँ कि combination therapy is there, the use of steroids in there. And how do we use steroids? Now remember this thing. In this case, you give intravitreal any anti-VEGF along with triamcinolone, make it there, give an injection. First injection should be like this. My regime is then after that follow with 3 injections of anti-VEGF, and that may be able to reduce the thickness of the retina. There are a lot of cases जिसमें आपका नहीं भी response आता है, लेकिन that is the only thing which I think so in my hand is worked about it. And as far as side effects are concerned, I don't think so there's much, especially in those cases of pseudophakic में आपका कोई ज़्यादा response नहीं होता. हाँ, अगर pseudophakic नहीं हो तो cataract के formation के ज़्यादा होते हैं. ये चीज़ एक है कि non-spotting patients में आप ये कर सकते हैं. Again, ये जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी जितनी studies होती हैं, कंप्लायंस कितनी होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि जी आपका पेशेंट देखें, जो हमारे पास पेशेंट आता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस थिंग, कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम आपको डायबिटिक आता है, यू हैव टू मेक श्योर एंड टेल हिम कि इफ ही डजंट गेट ट्रीटमेंट ही इज गोइंग टू गो ब्लाइंड. दिस हैज टू बी inculcated into his mind and into his brain straight away, because whatever we say, even these are the best studies जिसमें आपका ये है कि हर मरीज को पैसे दिए जाते थे. जो ये प्रोटोकॉल टीम है, देयर वाज अबाउट 700 पेशेंट्स, और उनको जब 3 साल के बाद जब एक्सटेंड किया तो उधर भी 40 to 40% पेशेंट्स गायब हो गए. और उनके भी जो है ना, पहले जब वो साल में 9 बार देखते थे और बाद में मुश्किल से वो 4 बार इंजेक्शंस पे आ गए थे, यानी कि रिडक्शन हो जाती है, कंप्लायंस कम है. तो इसलिए यू मेक श्योर कि यू इनिशियली उनको एक बार अचीव करें. जैसे मैंने आपको शुरू में केस दिखाया था कि अभी दिस थिंग इज नाउ बीन प्रूवन कि हार्ड एक्सुडेट्स होंगे तो फोबिया में आप उनको जो है ना, वो ये भी स्टडी आ गई जिसमें कि जी इम्प्लांट लगाने से बेहतर होता है. यही वो केसेस हैं जिसको मैं जैसे हार्ड एक्सुडेट्स को दिखा रहा हूँ. तो इफ यू गो स्टार्ट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवेस्टिन और एली और एनीथिंग along with triamcinolone, you get a better result. Same is with the pseudophakic patients. में अगर आप steroids यूज़ करें, the chances of them getting
good, they get a good response as compared to, and the chances of side effects are less. And again, this has been shown in protocol B of DRC and TNET. So again, prompt and effort treatment को हमने बात कर ली थी, इसको I'm just going to refer. And this again, I said, the loss to follow up is again between a protocol S maybe 33% of the patient, और ये वहाँ की हालत है. तो पाकिस्तान में कितने loss to follow up, and I think so all of you will agree to it. So what we have discussed in all this thing, कि the baseline variance वो बेहतर होते हैं, I think so we have discussed. I'm just positive that I'm just going to leave it in, and I will just give a one presentation. This is a case 2010 में शुरू किए थे, और मैं उसको माने की लाइट, एंड आई थिंक सो स्टिल होल्ड टुडे. जी 210 से थे उस वक्त भी, इसकी एक लेफ्ट आई में मैंने पहले 4 इंजेक्शन शुरू की, और ये मैंने उस माने में दिखाई थी, और ये करते करते कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, कभी मैंने इसमें ग्रिड लगाया, कभी मैंने इस पे ट्रांसफर लगाया. एंड ऑफ द डे जस्ट टू एंड करते हैं कि टोटल 37 इंजेक्शन लगे थे उस जमाने में, और इसमें 7 में combined traction over a period of 3 to 4 years, but still her VN remained at about 6/15 separately. So long-term treatment is possible and you get good results. So this is just about, I'm not going to discuss the future because time come, and it is for the trainees what you would like to treat with these kind of cases. ये क्या करना चाहिए, I think so. And जो take home message है कि आपको अब इतना पता चल जाना चाहिए कि इस treatment किस तरह से करना चाहिए, और इस ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए आपको, and that is what is the most important aspect of this thing. And I will just end up with a concluding remark. A wealth of clinical trial and real-world evidence supports the use of anti-VEGF therapy in DR and DM, including long-term data up to 5 years. Early intensive treatment that includes a loading dose provides the greatest gain in visual acuity and allows for a reduced treatment burden over time. Our treat and extend approach in DME facilitates reduced visits and can optimize clinical efficiency. Practical clinical considerations are key to managing diabetic eye disease. Thank you very much. Can I ask you one quick question? Sir, before injecting intravitreal, especially for PMOs, do you think it is very important to check the BP and HbA1c? Yes, मेरा देखें फ्लो चार्ट मैंने सबसे पहले बताया था. That is my the basic. That is अगर मैंने वो कहा ना कि अगर सारी क्लिनिक सारा प्रेजेंटेशन को ले लें, आप वो ले लें, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर आपका पेशेंट, अगर मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि जी आप इन अ क्लिनिक whether you will be able to check the BP of every patient who comes to you, or you can do, if you can do it. मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि हमारे बड़े एकेडमिक्स में सारों में डायबिटिक आई क्लिनिक्स होने चाहिए जिसमें आप बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. एंड देयर इज अ हाई टाइम वी हैव अ कोलैबोरेशन विद द डायबिटिक्स ऑफ एंडोक्रिनोलॉजीज के साथ होनी चाहिए, जिसमें ये हमारी इकट्ठी होनी चाहिए, जिसमें वी शुड बी सिटिंग टुगेदर, जिसमें ये सारा काम होता जाए. तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका जो भी पेशेंट आए, आप अगर उससे ये 3 क्वेश्चन ही कर लेंगे कि तुम्हारा बीपी क्या हाल है, तुम्हारे शुगर का लेवल क्या है, और इसको आप ट्रीट करें, और आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को उसको रेफर कर दें, उसे बता दें. मैं तो एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, मे बी लुक्स वेरी, और मैं कहता हूँ अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे. आई स्ट्रेट अवे से दिस वर्ड, एंड दैट इज द ओनली वे दैट है. उसके रिश्तेदारों को बता देते ही है, और साथ ही बताता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके, और दूसरा कॉन्सेप्ट, सॉरी मैंने इसको एम्फसाइज नहीं किया, कि जितनी अभी हम प्रोटोकॉल टी पढ़ेंगे उसमें बात होगी कि कोई स्टडी हैज़ नॉट बीन प्रूवन दिस थिंग कि जो इंजेक्शन अगर आप 3 लगा देंगे, 6 लगा देंगे, 36 लगा देंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ इट. जिस तरह डायबिटिक इटसेल्फ डिजीज आपसे दवाई खाते रहेंगे तो कंट्रोल होगी, इसी तरह जब तक इंजेक्शन लगते रहेंगे, लेजर करते जाएंगे, तो पेशेंट की विजन बच सकती है. देयर इज नो अदर वे अभी तक हमारे पास कि जी आप एक चीज़, हाँ जब तारिक मरवत की जीन थेरेपी आएगी तो अगर HbA1c कंट्रोल नहीं है, we don't inject, or we do inject. I will still do it. आप इंजेक्ट करते हैं? Yeah, we do inject. Just give the time to control. मतलब there's no studies and there's no proof कि जी आपके ग्लूकोज कंट्रोल है या नहीं है. ये वेस्टर्न और anti-VEGF will not working. Some optical नहीं work करेगी, it is going to still work with whatever the level of. It will give the time the patient to control. सर हमारे वार्ड में तो बड़ा होता था, तो मुस्तफा साहब होते थे. नहीं, मैं अभी सीधी बात, इसमें ये है कि आपका for the injection there is none of any studies which are saying कि just stop your treatment. No, don't give any treatment of anti-VEGF till the patient is well optimized control of your neck. ये नहीं है. There is no study. So
Sorry? कोई गारंटी नहीं कि if you tell the patient to control it and they So, will mरीज come आएगा every कहाँ पर? time. बस During मरीज that वापस time, नहीं it आएगा। should be given, I think. नहीं, आप उसको देखेंगे, आपके पास मरीज आया आँख के लिए, उसको नजर कम हो रहा है तो आया, वरना वो कभी खुशी से नहीं आया। There will be very few patient मेरे ख्याल जितने हैं सारे बैठे हैं जो कहेंगे जो 6 महीने बाद में आँखें चेक कराने हैं वो मेरी डायबिटीज है। There will be very few finger test में 90% वही आता है जिसको कोई ना कोई कैटरेक्ट हो गया या वो कैटरेक्ट समझ के आ रहा होता है। हमारे पास तो ज़्यादातर वही आते हैं जो कैटरेक्ट समझ के पता चलता है उसके पीछे डायबिटिक DMD से भरा हुआ। तो आपने ट्रीटमेंट उसको जरूर गए और उसको ये जरूर लाजम बताएं कि जी आप अपना शुगर कंट्रोल करें वरना आपको अंधे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नज़दीक कोई और टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होती। एंड 90% आप देख लें आपने खुद जो जहाँ डायबिटिक है उनके अपने कितने अच्छे कंट्रोल में बाकी को छोड़ें। Thank you so much, sir. Thank you, sir. It was an excellent talk, and diabetic macular edema is really a challenging disease to treat, and you have to individualize the patient. The next talk is about the anti-VEGF role in diabetic retinopathy. I will invite Dr. Faisal Murtaza for that. Assalamu alaikum. I'm Dr. Faisal Murtaza. Thank you very much, Professor Dr. Sanallah and Professor Daud Saab, Professor, all the guests in the symposium. रात को तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था लेकिन जनरल साहब जो है वो नहीं आ सके वरना हम लोग चर्चित टिक्का खाते। So my talk is on the update of the management of diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy हर जगह की प्रॉब्लम है और 1/3 जो पीपल हैं they are suffering from diabetic retinopathy और ये डेटा ये कहता है अमेरिका का कि by the end of 2045 diabetic retinopathy expected to increase by more than 50%. Pathogenesis वही कहते हैं कि it's a retinal neurodegeneration which may play a major role in the microvascular changes, and there is down regulation of retinal neurotrophic factors and neuron lost in the early TR before the vascular changes to appear. ये hypothesis है. Now, the types of diabetic retinopathy, non-proliferative, everybody knows, proliferative and diabetic macular edema. This is the mechanism in which there is interaction between the vascular endothelial growth factor and different VEGFs that leads to endothelial cell apoptosis and breakdown of blood retinal barrier, and angiogenesis leads to neovascularization. This is the overview of the treatment of diabetic retinopathy. Primary focus was on the laser photocoagulation for the last 40 years. And diabetic retinopathy study demonstrated that PRP reduced the 2-year incidence of severe vision loss up to 60% and showed 45% relative risk of visual reduction. Then, if the patient have vitreous hemorrhage and traction RD, then parsonal vitrectomy is the treatment of choice. And the third option is anti-VEGF, which is now we have to discuss. These are the different anti-VEGFs. These are the receptors. And this is the level of VEGFs in different diseases like DME, NPDR, and PDR, that almost more than 70% the VEGFs increase in the aqueous. These are the different drugs. This is the pharmacology. Everybody knows. The first anti-VEGF was bevacizumab, as Dr. Tariq Marwat discussed the detail of the history. Then ranibizumab was first approved in 2017. Then aflibercept, which was used for exudative macular degeneration in 2019 and then approved for diabetic retinopathy. This is brolucizumab, which is approved for ARMD, but everybody knows that it leads to vasculitis and vein occlusion and arterial occlusion. So the fourth one is faricimab, which is approved for wet AMD in 2022. Now, anti-VEGF. Now we will discuss in detail different mode of treatment.
So anti-VEGF as a primary treatment for NPDR and PDR. DRCR Protocol W, it investigates the use of prophylactic aflibercept every 4 months in the patients with moderate to severe proliferative diabetic, non-proliferative diabetic retinopathy to prevent the development of DME and PDR. अगर patient को moderate to severe NPDR है, तो we can give anti-VEGF to prevent PDR. और वो स्टडी जो है वो कहती है कि 399 आइज के अंदर उन्होंने 2 साल तक दिया और PDR वाज मतलब उसको जो प्रिवेंट किया पेशेंट को, दैट वाज 16.3% पेशेंट जो है उनको PDR डेवलप नहीं हुआ। सर आपकी वाली बात होती है कि प्रिवेंशन जो है उसके लिए क्या करना है। देन पैनोरामा ट्रायल डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी थी, इसमें 402 एडल्ट्स जो है विद डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको एनरोल किया और उसमें फिर हमने देखा कि एंटी-VEGF सीवियर NPDR में जिनको दिया तो 58.4% जो पेशेंट थे उनको जो है वो NPDR टू PDR प्रोग्रेशन नहीं हुई, पेशेंट जो है उसके लिए फ़ायदा ही हुआ, पेशेंट विल नॉट डेवलप PDR. Then recovery trial. Anti-VEGF therapy is also useful to stop the progression of PDR. अगर एक तो पेशेंट था जिसको severe NPDR था तो उसकी conversion into PDR तो उन्होंने बताया कि उसका हमें फ़ायदा ही हुआ ना। उसके बाद उन्होंने किया recovery trial for PDR. PDR में उन्होंने इसमें चेक किया कि उनकी severity of the disease जो है वो कितनी प्रिवेंट की, तो दैट सेड कि 67 to 74% जो है उनको क्वार्टरली इंटरवल के साथ इंजेक्शन दिया और उसके कुछ पेशेंट्स को मंथली में दिया। तो जिनको मंथली दिया था ना तो उनके अंदर DRSS स्कोर था, डायबिटिक रेटिनोपैथी सेवेरिटी स्केल, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो इम्प्रूवमेंट हुई उसको उन्होंने इस तरह इंडेक्स किया कि उसमें माइक्रो एनेरिज्म का काउंट कम हुआ, नॉन परफ्यूजन इंडेक्स कम हुआ, लीकेज इंडेक्स कम हुआ और रेटिनल वैस्कुलर बेड एरिया जो था वो इंक्रीज हुआ, यानी उसमें जो नॉन परफ्यूजन एरिया थे वो कम हो गए। फिर देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान लाइक फिक्स्ड इंटरवल रेजिम, PRN एंड ट्रीट एंड एक्सटेंड मेथड्स। फिक्स्ड इंटरवल जो था रिकवरी ट्रायल कंपेयर्ड मंथली एंड क्वार्टरली एफ्लिबरसेप्ट। At the 6-month visit, results showed that there was significant improvement in the DRSS score in the monthly treatment group as compared to quarterly. Decline in microaneurysm count, decrease in leakage index. Leakage index जो है ना उन्होंने चेक किया कि area of leakage on ultra wide field fluorescent angiogram divided by total visualized retinal area by 6 months. The third one is the retinal band vascular area, calculated as the total area of occupied retinal vessels divided by the total analyzable retinal area. So they said कि इसमें significant जो है ना improvement हुई उन patients के अंदर जिनको PDR था, उनको monthly जब injection दिए तो they improve a lot. Then PRN and treat extend, they involves regular follow visit with injection only when needed, and they do randomized phase 2 study in patients with NPDR and PDR. Compared PRN dose using either DRSS score or peripheral leakage index, so they indicate that 59% of the eyes जो है उसमें improvement हुई। Then clarity trial. The clarity trial was phase 2 study in which visual acuity outcome was C in the patient who have diabetic retinopathy PDR, and they said that there is improved deep hemorrhages and IRMA in 75% of the patients. So compare the anti-VEGF versus PRP as primary therapy. यानी अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि हमने सिर्फ एंटी-VEGF देना है या PRP विद एंटी-VEGF देना है। तो ETDRS, Clarity Trial, DRCR. They all said that combination therapy जो है वो treatment of choice होना चाहिए।
Anti-VEGF as an adjunct, यानी combined with the PRP. So everyone should not only stuck on anti-VEGF, combined therapy की तरफ जरूर जाना चाहिए. Then treatment for severe PDR with vitreous hemorrhage, and they study anti-VEGF monotherapy as an alternate to PPV. So pars vitrectomy is a treatment of choice if the patient have vitreous hemorrhage. We should not give only anti-VEGFs. We should think about the vitrectomy. And time of anti-VEGF before vitrectomy is 6 to 14 days. It reduces the intraocular bleeding, less endothelmy use. Then anti-VEGF versus combination of PRP with pars vitrectomy. So pars vitrectomy combined with PRP resulted in faster vitreous clearance and 36 weeks. Then the last option is combination of anti-VEGF with PRP versus pars vitrectomy. यानी आप पेशेंट को लेजर विद एंटी-VEGF करें या सिर्फ विट्रेक्टमी करें. सो वी शुड गो फॉर विट्रेक्टमी. उसके अंदर विद इन 8 वीक्स जो है वो आपकी क्लियरेंस हो जाती है विद लेजर. ये सिर्फ स्टक अप ऑन एंटी-VEGF और लेजर नहीं करना चाहिए. अगर विट्रेस हेमरेज है या ट्रैक्शन है तो गो फॉर विट्रेक्टमी. लेकिन उससे पहले अगर आप एंटी-VEGF दे देते हैं, लेकिन अगेन अगर उसमें ट्रैक्शन का एलिमेंट है तो फिर कंट्रोवर्शियल है. एंटी-VEGF करेक्शन सिंड्रोम, तो प्रोग्रेशन अगर ट्रैक्शन रेटिनल अटैचमेंट है पेशेंट को तो फिर वी शुड नॉट गिव एंटी-VEGF. ये डिफरेंट लेजर्स हैं. आई थिंक वी शुड कंक्लूड माइक्रोपल्स ये लेटर ऑन दूसरे यूज करेंगे. पीआरपी जो है अगेन कहते हैं कि इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. These are the settings. When to stop the laser? If there is new vessels regress, regression of IRMA, decreased venous changes, absorption of hemorrhage and disc failure. Take home message is we should control the blood sugar, we should involve medical internist, nephrologist, and control the risk factors, and tell the patient that this is not it's an ongoing process. जैसे जनरल साहब ने बताया ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो हर चीज़ को देखना है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है. पेशेंट को बताना है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा. थैंक यू वेरी मच. दो चीजें हैं. एक तो आपने बताया कि प्रोफिलैक्टिक यूज, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इज इट प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रोफिलैक्टिक यूज जो है ना वो है प्रोटोकॉल W. वो ये कहता है कि अगर पेशेंट को PDR है, ठीक है, तो उसमें आपने एंटी-VEGF देना है या नहीं. उनका क्वेश्चन है आर वी डूइंग इट और प्रोफिलैक्टिक. जी हाँ. अच्छा, अब जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उसमें ये करते हैं कि हम एक इंजेक्शन दे करके ना लेजर कर देते हैं, क्योंकि उसमें फिर प्रोग्रेशन कम हो जाती है. सिवियर एनपीडीआर का सिवियर एनपीडीआर फरमाया कि इसमें आप प्रोफिलैक्टिक दे सकते हैं ना. हाँ, वो ये कहते हैं कि सीवियर एनपीडीआर अगर किसी को है जी. उसको उन्होंने प्रोटोकॉल W दिया नाम, और वो ये कहते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर जो इरमा थे वो कम हुए, उनके अंदर डीप हेमरेजेस कम हुए, उसके अंदर लीकेज इंडेक्स कम हुआ, ठीक है, और जो वैस्कुलर एरिया था वो इंक्रीज हुआ, यानी नॉन परफ्यूजन एरियाज जो थे ना वो कम हो गए. तो वो कहते हैं कि एनपीडीआर, सीवियर एनपीडीआर के कन्वर्जन के रेट इनटू पीडीआर बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप प्रोफिलैक्टिक देते हैं तो उसका फ़ायदा ही होता है, वैसा नहीं होता. लेकिन उसके लिए उन्हें एफ्लिबर्सप यूज़ की थी. बात है कि लेजर करें, ये माइक ऑन करके एंटी-VEGF उसको लगाएं. The thing in laser they do have side effects like night vision, उसकी जनरलाइज आपकी विजन थ्रेशोल्ड या विजुअल फील्ड कम हो जाएगा उसका. लेकिन एंटी-VEGF अगर हम लगाते रहते हैं, ऑफ कोर्स देयर विल बी फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेशेंट, लेकिन इट विल नॉट रिड्यूस द नाइट विजन और उसकी जो क्वालिटी ऑफ विजन है, प्रोवाइडेड द शुगर इज कंट्रोल्ड बिलो 6 HbA1c. सब उसको उन्होंने कहा पैनोरामा ट्रायल. पैनोरामा ट्रायल जो थी उसके अंदर उन्होंने जो इंजेक्शन थे ना वो आफ्टर एवरी 4 मंथ जो एफ्लिबर्सप है वो हर 4 महीने के बाद दी. तो उसमें उन्होंने 2 साल के बाद जो रिजल्ट्स देखे
तो उसमें देखा कि उनकी विजुअल एक्टिविटी में 20/25 थी, और जो डायबिटिक रेटिनोपैथी सिविरिटी स्कोर है वो काफ़ी कम हुआ, यानी नंबर ऑफ माइक्रो एनेरिज्म्स जो है उसको काउंट किया, वो कम थे। उसके बाद जो इस्केमिक एरियाज थे ऑन एफएफए वो कम हुए, परफ्यूजन बढ़ गई। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी सिविरिटी स्केल में, तो उसको उन्होंने असेस किया तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट थी। तो एनपीटीआर, सीवियर एनपीटीआर टू पीडीआर जो कन्वर्जन रेट है वो कम हो जाता है आफ्टर गिविंग एंटी-VEGF। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है कि ये जो विट्रस फाइब्रोसिस है उसमें आपने कहा कि नहीं लगा, तो उसमें दो कंडीशन हैं, एक तो फाइब्रोसिस है और विट्रेक्शनली है डिटैचमेंट, उसमें नहीं लगाते या सिर्फ फाइब्रोसिस विट्रस में हो तो उसमें भी नहीं लगाते? उसमें ना आप ओसीटी करें या आप बी स्कैन करें, अगर मैकुलर पे ट्रैक्शन है तो फिर ना लगाएं। और इस्कीमिया है फिर इस्कीमिया तो बहुत सही रहेगा ना, तो फिर भी लगाएंगे। इस्कीमिया में लगाएंगे क्योंकि आपकी जो विट्रेक्टमी है उसके अंदर ब्लीडिंग कम हो जाएगी, मजे से करेंगे आप विट्रेक्टमी। वेरी गुड क्वेश्चन एक फारहान ने पूछा था किसमें हमने एंटी-VEGF इन proliferative fractions में लगाना है। I think Farhan will be the better person to answer that. तो डिपेंड करेगा कि फाइब्रोवेस्कुलर है कि खाली फाइब्रस है। फाइब्रोवेस्कुलर में देंगे, फैटलेस में देंगे। My question is regarding the PDR. So the issue is that if the patient has the PDR, what will be your preference? Either nowadays you go for the anti-VEGF to treat the PDR. I'm not talking about NPDR or else thing. Or either you will go for the pan-retinal photocoagulation. How many will give the anti-VEGF, any anti-VEGF or PDR? Can you raise the hand? Anti-VEGF or the PDR? I'll do a combination. I will do a combination. No, patient doesn't have a DME. Patient doesn't have a DME, only PDR. We are How many talking, of we you? are talking about PRP, not focal or grid laser. Yeah, we are talking about PRP. Yes, We are PRP. talking about PRP. So macular edema is something else. दोबारा से मैं क्लियर करूँ, पेशेंट को डीएमई नहीं है, पेशेंट को सिर्फ पीडीआर है। कितने लोग एंटी-VEGF पे इस पीडीआर को ट्रीट करेंगे और कितने लोग पीआरपी के जरिए? I will go for combination. I will give first dose of anti-VEGF first, or after 6 to 14 days I will go for the Combination. laser therapy. Because अगर आप पहले लेजर करते हैं तो पेशेंट I can't ask again. PRP again or not? Question ये है. खाकान का क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट को पीडीआर है, डायबिटिक मैकुलर एडीमा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप एंटी-VEGF देंगे? इस ओपन क्वेश्चन है ना फॉर ग्रुप। क्या आप एंटी-VEGF देंगे या लेजर करेंगे या कंबाइंड थेरेपी? है ना? किन पेशेंट्स में? हमारे मुल्क में मैं इसका बड़ा मिजाज है। PRP और laser. कंबाइंड ही है। चलो कंबाइन को छोड़ दो। नदीम कुरैशी बड़ा पुराना बैठा है। हम पीआर से आंखें बंद करके पीआरपी करते थे और आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग देयर विल बी लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हमारे बहुत दुनिया में ठीक ये तो बचे में आई थिंक सो इफ यू गॉट नथिंग एल्स टू डू गो फॉर पीडीआर। ये देखो मैसेज हुई है कि आपने पीडीआर करना है। यानी आप तो देखें पाकिस्तान की बात करें, छोड़ दें। मैं एक मिनट बात सुन लें सर, मैं एक हर सुलन में खत्म कर दूं, ठीक है ना? दैट इज द एक देखें we are not going to talk about clinical trials क्योंकि जब आप clinical trials हो जाते हैं ना तो clinical trials के बाद आप कभी अमेरिकन जर्नल्स में और अमेरिकन से पूछेंगे what are the clinical concentration, what is happening in the clinic, that is the most important, जिसको हम कोई नहीं करते हैं। हम जो हमारे कंपनीज हैं जो हम लोग हैं सारे हम सब clinical trials को देखते हैं, we do not see what is the clinically happening over there, and once you go there you will find out that still this thing is there. You can ask anybody in America अगर वो PDR को आएगा वो दे। हाँ, अब मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, दादा इसलिए मैंने का एग्जांपल देता हूँ। उसने कहा जी मैं आया हूँ सऊदी अरेबिया से और 3 महीने में छुट्टी है, पीडीआर मुझे माइट से उसके हेमरेज भी शुरू हुआ है जिसमें आप सर्जरी करनी सोचते हैं, ठीक है ना? एंड व्हाट आई डू नॉर्मली, और दो ऐसे और जो मैं अभी एक और ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कंप्लायंस नहीं होगी, आई कंबाइंड बोथ। आई विल गिव हिम एन इंजेक्शन. After 15 to I will go to laser. Then I'm going to do again injection after 1 month, and then giving a so 3 महीने के अंदर आपको 3 बार लेजर हो जाएगा और 3 बार आपको उसको हो जाएगा. At least
I think so we'll be saving eyes. And I've seen lot of eyes which we are doing inadequate, whether it is laser or whether it is VEGF. Because problem ये है कि आप clinically you can, all of you can satisfy this thing to us कि जी यार ये study है, ये मैं करता हूँ, ठीक है. लेकिन invariably जब आपको 2 या 3 इंजेक्शन मरीज को लग जाए, आप मुझे अपने क्लिनिक में बता रहे हो, समझते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो कि मुझे तो इंजेक्शन लग गए. लेकिन आपको ये पता है कि कोई स्टडी आपको ये नहीं बताती कि हर 3 साल के बाद ये प्रोटोकॉल टी के उन मरीजों के साथ क्या हुआ है, उनको बाद में जाके हर एक को लेजर्स लगे हैं, हर एक को स्टीरॉइड लगे हैं, हर एक को पीआरपी. ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये आपकी सारी स्टडीज में. सो आई थिंक सो combining all of these things is the best answer, and in all population using the shortest period is more important. सर आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस फॉलो अप में करते हैं? ओसीटी एफएफ के दोनों नहीं, आप कहने से आप बेसिक क्लिनिकली देखें तो आपको 90% आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है. बेसलाइन में आप बेसलाइन में आप हर एक की अभी आते हैं, क्या करते हैं? हर एक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे इतना प्रॉब्लम बढ़ गए कि आप सारों में कर ही नहीं सकते. मतलब जहाँ 100 मरीज आपका डायबिटीज है, कहाँ करते हैं? हाँ, ओनली दोज पेशेंट्स व्हिच यू गॉट अ प्लस माइनस, जिसमें आप फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, इसमें आपको स्कीमिक की फीलिंग, स्कीमिक मैक्रोपैथी का फील होता है आपको कि आपकी विजन बहुत रिड्यूस्ड है और आपको लगता है कि रेटिना में आपको कुछ चेंजेस भी नजर नहीं आ रही हैं. यू सी ये क्या वजह हो सकती है? आपकी ओसीटी में भी आपको कोई प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा. लेकिन ओवरऑल पीरियड में अगर आपको डीएम नजर आ रही है तो देयर मे बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एफएफए आजकल के अगर इन लेकिन still I would consider this thing कि आपको still 90 doctors more than almost more of a negative than 90%. जब मैं चीज ऐड करूं, अगर हम कंबाइंड में गए या पीआरपी कर रहे हैं या एंटी वेजेफ दे रहे हैं, एक तो चीज है कि whether we are treating the disease, one thing is the quality of vision, the second question is the quality of the vision. The treating the disease is one thing you can treat with any way. So the quality of vision is with in which option, whether it's with the anti-VEGF or whether with the pan-retinal photochromic. Anti-VEGF. Because PRP is destructive. ये जवाब भी इतना सिंपल नहीं है. इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलेगा. मैं इस पे एक कमेंट करूंगा. बेसिकली आपके जो ऑप्शन भी आप पिक करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कौन है और कंप्लायंस क्या है उसकी और उसकी पेन कैपेबिलिटी कितनी है. उस पे डिपेंड करके आप ऑप्शन पिक करेंगे. मेरे ख्याल में ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट किस टाइप का है. से अगर आपका एक कोलीग है और डॉक्टर है, प्रोफेसर है, यानी तो उसके लिए पैसों का भी कोई इशू नहीं, हर मंथली इंजेक्शन भी लगा सकता है. तो जो खानदान बात कर रहा है, इस बंदे के लिए लेजर ठीक नहीं है, उसकी पेरिफेरी आप सारे विजुअल फील्ड को कंप्रोमाइज कर लोगे, नाइट विजन को कंप्रोमाइज कर, ऐसे पेशेंट के लिए एंटी-वेजेफ पे रखो. अगर दूसरा कोई पेशेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि इसको आप एक एंटी-वेजेफ लगाओगे, दूसरे के लिए आएगा ही नहीं. या फिजिक्स का प्रोफेसर है वो. एग्जैक्टली आएगा नहीं. फिजिक्स का प्रोफेसर 34 का. तो ये एग्जैक्टली, तो इट डिपेंड्स, यू हैव टू इंडिविजुअलाइज योर पेशेंट. नहीं, मैकुलर थिकनेस भी तो काउंट करती है ना. ये हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी विदाउट टीएमई की बात. ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, the next talk is about the role of anti-VEGF in vein occlusions by Professor Qasim Latif. Thank you very much for the invitation. And I'll briefly talk about the role of anti-VEGF. And we have all, so we have gone through the various kinds of anti-VEGF available and their role and how their pharmacology works and how they work for the eye. But I'll be specifically talking about the role of anti-VEGF in venous occlusions. So retinal vein occlusion is a very prevalent disease in our society and all over the world. Roughly around 16 million people are affected by it every year. We're broadly classified into branch retinal vein occlusion, central retinal vein occlusion, and hemiretinal vein occlusion. So these are the broad classifications. And macular edema is the most common complication and it's the primary cause of vision loss. So जब भी vein occlusion होगी, the only thing we're going to treat is the macular edema. And जितनी जल्दी हम इसको ट्रीट करेंगे, उतनी जल्दी अच्छे विजन की हमारे पास
chances हैं patient को बचाएं. So that's the take home message. Whenever you see macular edema, it has to be treated promptly. So what are the treatment options? Like we have seen, we have got three drugs: ranibizumab, Avastin, bevacizumab, and Eylea. That's the active. I don't need to go into the pharmacology, but the only two drugs which are currently approved by the FDA are ranibizumab and aflibercept, whereas Avastin is off-label. So reason ये बताना बहुत जरूरी है off-label and FDA का, because recently आप news में भी देख रहे होंगे कि there was an outbreak of endophthalmitis after Avastin, and we had to go through a lot of मीडिया के ऊपर डॉक्टर्स की बैशिंग हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट में हर जगह हुई, एंड स्टिल वी आर पासिंग थ्रू इट. डॉक्टर्स पे FIR हो रही जस्ट बिकॉज. और मीडिया ने सबसे बुरा रोल ये प्ले करता है कि ये डॉक्टर ये इंजेक्शन तो आंख के लिए बना ही नहीं, और ये आपकी आंख में लग कर आंख जाया होगी. और तब से हम लोगों को बता रहे हैं कि हर पेशेंट आके पूछ रहे थे मुझे 10 साल से हमारी आंख को टीका लग रहा था, गलत टीका आप लगा रहे थे. सो दिस इज समथिंग वी शुड नो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज एनी इंजेक्शन. Now we need to be very very clear. You tell them it's an off-label use or it's an FDA approved, because कल कोई प्रॉब्लम होगा सबसे पहले यही लोग सबसे जिनको आप ठीक करेंगे आपको पकड़ेंगे. So just because we've been through it for the last 6 months, so this is something very important for us. Off-label, what is off-label and what is FDA approved? You need to tell this as an informed consent to the patients. So studies which proved their role, Bravo and Cruz, way down in 2006-7 ये हुई, और उसके बाद अब नई स्टडीज जो गैलीलियो कॉर्टिनस हुई, they showed the role of anti-VEGF in vein occlusions. And सबसे important चीज है कि vein occlusion का पेशेंट को ट्रीट कब करना है. So these are the patients जिनकी विजन बड़ी अच्छी होती है. वैसे ही आता है कि थोड़ा सा जिनको ब्लर नजर आया and you dilate and you see there's a small hemorrhage or blockage, मैकुला पे है, पेरिफेरी पे है, उनकी जिनकी मैकुलर एडिमा ही नहीं होता उनको पता ही नहीं चलता वो वेन ओक्लूजन हुई है. कई दफे ऐसे पेशेंट आते हैं वेन ओक्लूजन के साथ ब्लरी विजन है एंड दे डोंट इवन बॉदर. सो व्हेन विल यू ट्रीट? सो इधर इनकी विजन 6-6 है, विल यू ट्रीट? और विजन कंसेंसस ये है कि विजन शुड बी लेस देन 6-9. दे शुड हैव डिफिकल्टी इन रिटन N6, आप ट्रीट नहीं करते. विजन लेस देन N8 यू विल ट्रीट. एंड अगर फ्लूइड OCT के ऊपर विदिन 500 माइक्रोन्स ऑफ FAG है, फोविया के साथ है, only then you treat. Dosage regime, again different dosage regimes हैं. What I basically do in my clinical practice, so I give them monthly injections. I tell them कि जी आपको 3 इंजेक्शन तो लगेंगे, लोडिंग डोज आपको 3 देनी है. उसके बाद PRN डोज, उसके बाद as required I do the serial OCTs, या जहाँ पे हमारे पास OCT की फैसिलिटी नहीं है, और ये स्टडीज ने किया is the visual acuity. अगर आपके 3 टीके लग गए हैं या 2 इंजेक्शन लग गए हैं, तो लास्ट 2 विजुअल एक्टिविटीज अगर इंप्रूव नहीं हो रही, दिस शुड बी अ स्टॉपेज टाइम. इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू OCT एंड यू कैन सी कि 2 इंजेक्शंस लग गए हैं, लास्ट 2 के ऊपर किसी की विजन इंप्रूव नहीं हो रही, दिस शुड बी अ स्टॉपिंग टाइम. सो ट्रीटमेंट कब रिज्यूम करना है? बेसिकली ये पेशेंट्स को फौरन पता होता है, जरा इनकी विजन कम होती है फौरन दोबारा आपके पास आते हैं. व्हेनेवर दे विल कम बैक टू यू अगेन, यू विल फॉलो द सेम regime. You will give them 3 injections, or now the study says you go to PRN. What is PRN? As required. So जब भी इनकी विजन कम होगी आप इंजेक्शन लगाएंगे, 4 वीक्स बाद इनको बुलाएंगे, you will see the visual acuity बढ़ रही है कम हो रही है. अगर विजन इनकी इंक्रीज हो रही है, you will give them an injection. अगर विजन इंक्रीज नहीं हो रही, वहीं स्टैटिक हो गया है, 2 रीडिंग्स इनकी स्टैटिक हैं, 4 months के अंदर स्टैटिक हो गया, then you will not repeat this, means this is their final outcome. And other thing, when to stop. Sorry, this is the last thing. Important thing है रुकना कब है. ये नहीं कि हमको 15-20 टीके दे देना है, हमने रोकना भी है. So रोकना वही है when you see कि 3 consecutive times इनकी OCT में कोई changes नहीं आ रही, या OCT तो बेहतर होगी, या थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, या वर्स होगी, विजन में फर्क नहीं पड़ा. So our stoppage thing is the vision. अगर पेशेंट की विजन इंप्रूव नहीं हुई लास्ट 2 इंजेक्शन से, this means either you will stop or you will go to a different modality. So this is my first case. So you can see vein occlusion inferior, VRP हुई, and vision was 660. First injection, dramatic improvement. Patient आगे मार रहे थे, बहुत अच्छी vision होगी. 2 months, and 3rd month 6.9. 3rd month के बाद I stopped giving him injections. I followed him twice, and if the vision was still 6.9, कोई fluid नहीं आया, that was the end of the story. Case 2 comes with central pituitary vein occlusion. Vision is 2/60. 2 months, 660, 6 months after 6 injections. So I went on PRN. The vision was improving after every injections. Took 6 injections, 612. 612 पे आके उसके बाद उसकी vision improve ही नहीं हुई, and that was it. So after 612, the vision was not improving, no more injections given. But
I kept on following on monthly interval. So this is an interesting case, case 3, count fingers, sphere ischemic, CRBO, 4 months, 4 injection लगे, vision hardly improve हुई, 9 months, 9 injections, vision 660, no further improvement. अब इतनी severe macular edema है, जा ही नहीं रहा, हर दफा इंजेक्शन लगा, and then these patients they keep on coming to डॉक्टर साहब एक और लगा के देखें, डॉक्टर साहब एक और लगा के, because count finger से वो 660 पे आ गया, but the vision is not improving. So like this is my stopping point. I tell them कि भाई अब improve हो ही नहीं सकती, हमने last 2 injection लगा लिए हैं, vision is not improving, not टीके लग गए हैं, like why do you want more injections? But these patients will keep on insisting कि और लगाएं, शायद बेहतर हो जाए, but at some point you should have your threshold. So threshold for me is 2 injections जिनमें कोई vision improve नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, that's where I tell them to stop. अगर इसमें कमी होगी, then I'll give you more injections, otherwise I will not repeat more injections. So another case, again, so this person comes 3 injection, 1/60 vision, 3 months, 3 injection vision को बहुत ज़्यादा अच्छी improve नहीं हो रही थी, 6 months and 5 injections. So 6 months, 5th injection के बाद I stopped giving more injections. And the vision came on 6-9 partial. So 6 months में 5 injections का मतलब है last injection मैंने नहीं लगाया. So this vision of 6-9 is continuously वही रह रही है. So 5वें injection के बाद vision 6-9 पे आकर रुक गई है. 6 महीने आया, मैंने OCT की है, थोड़ा बहुत fluid है, but vision is stable. So I'm not going to repeat more injections. So this is, I think, हमारे ये भी पता होना चाहिए कि अपने रोकना कब है. This is our important thing. So I would like to conclude that anti-VEGF achieves very good visual acuity in majority of the patients. But remember, 30% of your patients, they will not improve. Either because of ischemia, because of other concomitant diseases की चल रही होती है उसकी वजह से. So 30% patients में vision will not improve. And ये वो patient है जिनको हमने बार बार टीके repeat नहीं करना है. Because अगर हम करते जाएंगे, vision is not going to improve, and you will actually have some other complication of anti-VEGF further. So once that does not happen, then you need to look for other causes. And I think Pakistan में available नहीं है also drugs or दूसरी drugs. So these are the ones जो यहाँ पे फिर काम करने आती हैं. या role of retiny अगर ERM है, कोई hyaloid है, then start looking for other causes. So obviously we have OCT available. Every center has got OCT now. So if you are thinking कि नहीं improve हो रही, rather than यही injection repeat करने के, then we have other options, steroids, surgery. जहाँ available है फिर वो करना चाहिए rather than repeating these injections. Thank you. सिर्फ एक क्वेश्चन है, जैसे केस 3 आपका है जिसमें 660 पे विजन रुक गई थी और यू आर स्टॉपिंग द इंजेक्शन, वो स्पेसिफिक वो केस कैन यू कंसीडर स्टेरॉइड फॉर दैट? Yes, so we are just talking to about anti-VEGF ना, फिर वो एक नई कहानी है, जिस steroids कौन से. Yes, so अब हमारा फिर, so my aim is शो करने के लिए कि anti-VEGF is not the only answer. So 30% will not improve. So उनको हम टीके लगा. In our practices, we see people जिनको 2-3 साल से हर महीने टीके लग रहे हैं और improve ही नहीं हो रहे. So once they have stopped improving after 2 injections, then you think of other things. So Canacort, steroid, suprachoroidal लगाएं, intravitreal लगाएं, steroid implant combination जिससे मैं तो कराची में 1.5 लाख का शायद मिल रहा है Ozurdex implant आपके वहाँ जो ऑर्थोडेक्स मिल जाता है ऑन रिक्वेस्ट दुबई से वही 1.5-2 लाख का मिल रहा है. कुछ पेशेंट्स ले आते हैं, लगा देते हैं उनको. सुप्राक्राइडल का बड़ा अच्छा इसमें अभी रिसेंटली हमने तो अब फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे वही जाते हैं ना. या अगर किसी की ईआरएम में किसी ने ईआरएम देख ली और आप इंजेक्शन लगाई जा रहे हो, बाद में पता चलता है ओसीटी करते हो ईआरएम निकल आती है. सो ये कि यू शुड हैव अ थ्रेशोल्ड का हमने रुकना. दिस इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट. सो अब वो 660 पे आकर रुक गया, अब वो रोज आके बैठ जाता है जो कुछ करें व्हाट कैन यू डू. अच्छा, ये लेजर आपका ख्याल में किस वक्त करने चाहिए इनमें? सीआरबीओ में पेशेंट, इफ यू हैव सम थ्रेड के पेशेंट आए हुए हैं हमारे पास, अफगानिस्तान से पेशेंट आते हैं और दे आर लॉस्ट टू फॉलो अप. When the hemorrhage is clear, should you consider laser in that case, or still you have to watch and observe? So or wait for the new vessel to do laser? So new vessels यहाँ एक FFA करवा लें. Actually हमने FFA कराने छोड़ दिए हैं. Problem ये है कि wide angle FFA more than 5 days after 10 days आपको पता है ischemic है, then you have to do. So वो patient जिनके अंदर बार-बार fluid आ रहा है, I would always suggest go for an FFA. जो ischemic है एक दफा laser करते हैं and then आपका काफी मसला हो जाता है. बट सर यही है ना कि हम वी डोंट थिंक
कि अब अगर ये काम नहीं करता, what are the other things? Maybe इतना retinal ischemia है, so anti-VEGF will only stop the ischemic response at that time, जो जरूरत थी, लेकिन जहाँ से produce हो रही है उसको तो नहीं They रोकेगा। keep on coming. They keep on coming. CRVO वाले patient they Keep on coming. अगर पेशेंट एक सर्टेन टाइम के बाद दे लॉस फॉलो अप, Yes. उन पेशेंट में आप लेजर करेंगे या इफ इवन इफ देयर इज नो न्यू वेसल और कोई इस्कीमिक एरियाज नहीं है, या फिर उनको ऑब्जर्व नहीं, I will only observe, I will only do laser अगर मुझे इस्कीमिया मिलेगा, और या वो न्यू वेसल, ऑब्वियसली जब न्यू वेसल डेवलप हो रहे हैं तो आपने लेजर करना ही करना, देन वो तो उसका ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगा, देन द डायग्नोसिस चेंजेस। लेकिन एफएफए का रोल है सीआरवीओ के अंदर, नॉन रिस्पॉन्डिंग सीआरवीओ, नॉन रिस्पॉन्डिंग मैकुलर एडीमा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आफ्टर 2 इंजेक्शंस यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ वाइड फील्ड एफएफए, वो तो जरूरी, बहुत जरूरी कराना। My point of discussion is, if you get a patient of PRV or CRVO and you give the 3 injections, patient from the 660 comes to the 69 or 612, but the edema is still 500 micron or 450 microns. So will you stop injecting this patient here, or will you dry the macula with any number of patients? My impression is, for the loading doses, I will dry the macula regarding anything else. First I will dry the macula, when I get dry the macula, whatever we can get, then I will go for Pronata. So when it is needed, because vein occlusion, this Pronata goes on for the many years. So how you do? You first loading dose ends up with the vision, or first loading dose ends up with the dry macula? So इसमें 2 चीजें हैं, vision versus macula versus OCT. So either you start with one standard. So अक्सर जो CRVO के पेशेंट BRVO के आते हैं, उनको एडिमा होता है, their vision is 6/6 and you think मैं उन्हें ट्रीट करूंगा ना करूं। Macula dry करना। So macula dry करें, but again what is your macular dryness? 2 consecutive OCTs जिनमें 50 माइक्रोन्स की चेंज नहीं हो रही, this means that's it, वो आपके ड्राइनेस स्पॉट आपने अचीव कर लिया। हम क्या करते हैं, वो एडिमा होता है, लगाई जाते हैं, 10 टीके लगे थे, मैकुलर एडिमा ड्राई नहीं हो रहा। So बात ये है कि आपने रोकना कब है, this is more important than giving the injection. So और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने मैकुला ड्राई कर दिया, 4 महीने बाद पेशेंट पूर विजन के साथ प्रेजेंट करता है या मैकुलर एडिमा के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, उसकी विजन अभी 6/6 है या 6/9 है, एडिमा जो 320 पे मैंने छोड़ा था वो 500 पे फिर आ गया, आप ट्रीट करोगे उसे कि नहीं करोगे? Yes, I will treat because अब I'm following OCT. अगर OCT में change हो गई है, more than 50 microns बढ़ गया है, this means you have to treat. I think so. ये जब हम बात करते हैं ब्रांच वेन या वेन, जब ये सारा आ जाता है तो पूरी नई स्टोरी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल अब कासिम ने कोशिश की बेचारे ने कि उसको सिर्फ एंटी-VEGF तक रखे, लेकिन हम सारे पसंद नहीं आते। लेकिन आई थिंक सो ये इम्पोर्टेंट चीज और प्लस स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है। इनिशियल ट्रीटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड पेशेंट्स समटाइम कमिंग टू यू with having a CRVO or even a PRVO with having a very huge kind of a deep macular edema, और उसमें एंटी-VEGF का और रोल ऑफ स्टीरॉइड्स जो आपने बताया, आई थिंक सो देयर इज आल्सो अ रोल ऑफ स्टार्टिंग देम विद स्टीरॉइड्स विद अ कॉम्बिनेशन थेरेपी. If I come across a CRVO which is more than 500 or 600 and which I feel the vein is profoundly lost and not according to, even if it's a non-ischemic, I normally start with a combination therapy, and I think so my combination therapy has got a better result as compared to give us इंटरवेटिव लगाते हैं सुप्रापर्ट नहीं मैं IVT वो स्टीरॉइड उसको ड्राई तो बड़ी जल्दी कर देता है, लेकिन मेंटेन नहीं करता ना, लेकिन वो जो बाद में रिबाउंस देता है ना, लेकिन वो जो रिबाउंस है ना, बात सारी ये है कि 3 मंथ के बाद दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड, अगर आप उसकी लेना भी फ्लोरोक्विनोल वाली जो अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आई है फ्लोरोक्विनोल वाली, उसमें यही आया है कि दिस रिबाउंड होएंगे, and that is the reason why steroid has been implants have been used ये रिबाउंड को रोकने के लिए। अगर वो आप बात कर रहे थे, I still remember one of a very senior VVIP patient जिसको मैंने अभी कम से कम 30-40 इंजेक्शन लगा बैठा, वो रुकता भी नहीं है ना, मुसीबत ये है। लेकिन his VN is 6/9 at the The 6/9 फिर जाता है 6/9 VN पे एडिमा 350-400 रहता है, लेकिन मसला ये है कि वो
वीएन ड्रॉप आप 6/9 या 3 महीने बाद फिर 6/18 है। बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाँ। से कि आपको वो पेशेंट अभी तक वो वहां पिंग पोंग ही बना रहता है पिंग सारा। पोंग चलता रहता है, दिस वन यू हैव टू पर्सिवेयर। ऐसे पेशेंट के लिए सस्टेन रिलीज जो मतलब ये ऑजोडेक्स है नहीं, फ्लूसिनालोन है नहीं, आप सुप्रापाराइटल या इंट्राविट्रल स्टेरॉइड देते हो, वो 2 हफ्ते बाद वियर ऑफ ऐसे ही करता है और उसके बाद रीबाउंड हो जाता है। ग्लाइकोमेटर्स होते हैं, वो उनका क्या करेंगे? ग्लाकोमा के साथ और प्रेशर फिर 50 इयर्स का 55 साल के ये लोग हैं, 55 साल में ग्लाकोमा का वैसे प्रेफरेंस है, कैटरेक्ट है, साथ होता भी इसी एज में ही है। लेकिन ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, एक ट्रीटमेंट किसी एक पेशेंट के लिए आपने जस्टिफाई कितने लोग अब सेक्टोरल पीआरपी करते हैं बीआरबीओ में, कितने लोग सेक्टोरल पीआरपी करते हैं? अगर मैकुला ड्राई हो गया लेस देन 300 माइक्रोन मीटर और वेन एक्लूजन, कितने लोग सेक्टोरल पीआरपी करेंगे? So स्कीमिक ischemic होगा तो I'll do it, but because वो एक rebound उसकी वजह से हो रहा था। पुराने जमाने में बड़ा अच्छा था ना, देखो कभी कभी एफएफए के फायदे होते हैं। हम जो पुराने जमाने काफी में फायदे। वो ना, मैं उस जमाने में हम स्ट्रेट पे ये कहते थे कि एफएफए जैसे ड्राई होना शुरू होता है एक बार एफएफए करते थे, उसके बाद स्कीमिक दिन होते लाजमी लेजर करते हैं, जिसमें स्कीमिक नहीं होते थे नहीं करते। I think you can do OCT angio now. They are हाँ, getting मतलब broader वो मतलब, लेकिन you can't लेकिन that kind of a result. हम एफएफए क्यों कम करवा रहे हैं? I think the comment I would like to सर make वो is मसला ये है कि एंटी VEGF लगी जाते हैं, वीएन इंप्रूव हो जाती है, किसी को ये फिक्र नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या है। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि पेशेंट मेरे पास 5 साल के बाद भी आना है। जो करने वाले वो भी नहीं करते बिकॉज़ द ड्रग इज नॉट ब्रेकएबल। ये बात भी है। हाँ, ये अभी कल को प्रॉब्लम हो जाए फिर बम फट जाएगा। कई कैमरे पड़े ना, लोग नहीं करते। सर, दूसरी बात- सेकेंडली कोई भी उल्टी वगैरह भी आए कॉम्प्लिकेशन उसको हालांकि इतनी ओसीटी ए में आप मिल जाता है, आपको कैपिलरी परफ्यूजन फॉरवर्ड मिल जाता है। रोल है। असल लेकिन ड्रैगन तो कैनाकॉट भी नहीं है फॉर इंटरमीडिएट। बहुत ये तो और मुझसे पूछेगा जब से आप फंसे हैं। उसके बारे में बैन रहूंगा सबसे आगे। कासिम जैसे पुलिस वाली आज OCT पर मैकुलर एडिमा नहीं सुसाइड हो रहा था, लेटर ऑन वो डायबिटिक मैकुलर जो सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है वो लैमिनर मैकुलर वो भी कन्वर्ट होता है। वो तो होगा obviously, अगर आप उसको कंट्रोल कंट्रोल नहीं नहीं करेंगे, इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन स्टेरॉइड स्टीरॉइड्स का तो रोल डेफिनेटली है। चले दुआ करें ऑजोडेक्स आ जाए। हाँ सर, बहुत अच्छा शुरू 4 महीने गुजर जाते हैं बड़े अच्छे। thank you sir, it was a great talk. Now before proceeding to the next talk is about, by the there's a VEGF Symposium, but there's slight change in the program because the Honorable Chief Guest, Professor Dr. Mohammed Dawood Khan, had some earlier prior commitments which were communicated to us. Sir has to leave early. So we are just arranging the award ceremony a little early, and then the sir will leave. I would request the Chief Guest, Honorable Chief Guest, Professor Mohammed Dawood Khan, to kindly come forward. President PVRS, Professor Dr. Mohammed Sarabjan sir, Guest of Honor, Professor Shad Namas sir, Chairman the session, Professor Dev sir, and Co-Chair, Professor General Manager Science of the come kindly for forward. The speed of lights of the The awards, the presentation, the sheet for the presenters and the certificates will be given at the end, but there are some other awards that we will be giving now. The first award is for the ex-president PBRS and the ex-general secretary PBRS. They have worked hard for the development and the progression of PBRS and improving the face value of PBRS. And we appreciate their services. We welcome Professor Nadeem Qureshi Saab. He was the ex-president of Pakistan Veterinary Society. I would request Professor Shah Ahmad Saab to present the sheet. The second. Thank you, sir. The second is for the ex-General Secretary Pakistan Retina Society, that was Dr. Hassan. Unfortunately, he couldn't come. I would request Professor Naveed Qureshi to kindly receive on his behalf. The next are the 3 awards.
the Pakistan Vitreoretinal Society President Excellence Awards. These awards are for the recognition of the outstanding services and dedication of some of the bright vitreoretinal surgeons and the seniors that we are having that have contributed a lot to the clinical training, teaching, and the research involved in Pakistan in the vitreoretinal field. And they have made a face value of Pakistan Vitreoretinal Society in the national and international symposium and conferences. The first award is for Professor Dr. Amir Awan, and it is to be presented by President PVRS, Professor Sanjay. Thank you, sir. The second award is for Professor Hussain Ahmad Khakan, and it is to be presented by Professor Jalal Islam. Third Presidential PVRS Award of Excellence is for Professor Dr. Huma Kiani. Unfortunately, she was busy abroad in another conference, so she couldn't come. I would request Professor Professor Dr. Qasim Latif to kindly receive on her behalf from Professor Mother Isaac, sir. The next, there are two awards of Legends of PVRS Awards. These are for the Legends of Pakistan Vitreoretina surgeons. These are the legends who initiated Vitreoretina program in Pakistan, and because of their selfless devotion and contribution, now we are having a lot of vitreoretinal surgeons in Pakistan. They were a source of inspiration for the generations, and they have, there's no doubt in their legacy, and they were undisputable in their careers. The first award is for Professor Dr. Mukhtar Ahmed. He was informed, but unfortunately he couldn't come. I would request Dr. Faisal Murtaza to kindly receive on his behalf. Professor Muhammad Daud Khan sahab is requested to kindly hand over the awards. The second is for the legendary Professor Latif Chaudhry sahab, and I would request Professor Tariq Khan sahab to receive on his behalf. I would request now Professor Dawood sahab to kindly hand over the another sheet to the current President of Pakistan Vitreoretinal Society, Professor Dr. Sanam Jansan. And sir, another award to me for being very important. Last remaining is I would request the President PVRS, Professor Sanam Jansan, is also the Director of PICO, who has taken all these arrangements, made all the arrangements. I would request first sir to give over the sheet to the chief guest, the Honorable Professor Dr. Muhammad Daud Khan.
guest of honor, Professor Dr. Shah Muhammad Sahab. The other sheet is for the chairman of the session, Professor Peshawar sir. I would request President PVRS to hand over the sheet to the co-chair, Jana Madrasa sir, being the co-chair of the session. Lastly and most importantly, the last award is for the Bayer Pharmaceuticals because without them we couldn't have arranged this symposium, and we are very thankful that you are being very helpful in arranging this symposium and supporting. Thank you, sir. It concludes the award ceremony. I would request Professor Muhammad Al Khan sir to please say a few words. It's a very proud morning, particularly for me. I take you back to 1977, 79. General Ziaul Haq was in Karachi and we had an international meeting. He spent a lot of time at lunchtime and World Health Organization was watching this drama. The Indians asked him that, our parents belong to different parts of Pakistan, we wanted to visit that, but they won't allow us. So he called his ADC and said, Indians can go anywhere they like. Immediately after that, a consultant was invited by World Health Organization to visit Pakistan and see where does this country stand in terms of eye care. This professor was from Australia, but he worked as a professor in the United States. So he came here, spent 2 weeks, and came out with a report that this country has only 80 ophthalmologists. And those 80 ophthalmologists, 46 out of 80 districts, 46 do not have an ophthalmologist. And cataract was the most common, and the prevalence was 2%, 2% of blindness. So the OSP was in it's complete surprise. What should we do? Anyway, they worked very hard, and fortunately, we see the fruit of that now. It's such a proud morning for me to see that we have such talented individuals working in vitreoretina. And we are almost now at par with many countries in the world. When we come to diabetes, the current prevalence of diabetes in Pakistan is 4 crore, 72 lakh, 42,000. And they said that similar number is there, but they don't know that they're diabetics. But almost similar number. And they said that this is the highest prevalence in the world. So if you go back to our early days training, we were taught that as doctors, you will perform 4 tasks. Number 1, you will prevent disease. Number 2,
you will promote health. Number 3, you will treat. And number 4, you will rehabilitate those where you can't do anything. Out of these 4 noble tasks, we are only sticking to one, and that is treatment. We have almost forgotten about the other 3 major roles that we must perform. That you just focus on the subject that you are doing. We anti-VEGF का 2-3 ड्रामे आपने देख लिए. First, I think it occurred somewhere in KBK that on one morning 12 injections were given, and all of them developed endophthalmitis and went blind. And then very recently, it happened in Lahore and also in Multan. A large number of people went blind because of this injection. So, and the cost is enormous. And one of the 5-6 important problems that we as a country face, one is poverty, and second is illiteracy. The number 1, people don't know that they're diabetic. And when they know that they're diabetic, by that time already a lot of problems have occurred in the retina and in the rest of the body. We used to see a patient in Lady Reading Hospital. He was 46, 47 years old. He had lost both hands. They were chopped. His legs were chopped. His kidneys were dysfunctional. His eye was almost blind. So he had put beads to what we call a score, and he would put his half hand and he would come to the OPD, and this was because of diabetes. So I think the dilemma. I mean, you are the jewels in the crown. You are doing excellent job. But I think if we look at it globally, in terms of Pakistan, how many people can afford anti-VEGF? How many people have access to this? And then what about these serious complications that we are getting? So I think we are left with one best option, and that is that OSP need to have very strong advocacy with the government. Very strong advocacy, that you will have to change the mindset of the people. We will have to train, we will have to teach people that diabetes is a preventable disease. Quran Pak ke 2 ayat, kulu washrabu wala tusrifu, khao piyo lekin israf mat karo. And the kind of israf that we do, we can see it every day. Every 3rd person is overweight. So the next Quranic verse is وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. I created balance, don't disturb it. And we are always disturbing the balance. So I think one of the tasks that you, the jewel of the crown in vitreoretina, one of the things that you need to tell the rest of the ophthalmologists, and particularly at the primary and secondary level, that we have to make a lot of efforts to prevent the disease. Unless we do that, it's going to be a total disaster. But I'm very happy to see that in vitreoretina, out of 80 ophthalmologists in 1980, we now have such a strong team of vitreoretina, and we can stand anywhere in the world and say we are representing Pakistan. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. The next is the symposium by Wale, and I will request them to kindly take over.
which will be comprising of a short video presentation followed by a panel discussion. When it comes to the available anti-VEGF or anti-angiogenic alternatives, understanding the science along with the results of multiple clinical trials and studies can be complicated. Today, we would like to give you some perspective on the advantages of using the anti-angiogenic aflibercept or Eylea to treat retinal disease. Ocular angiogenesis, the formation of new vessels from the existing vascular tree, is a major cause of retinal disease and severe vision loss. Vascular endothelial growth factor, or VEGF, is one of the predominant factors in ocular angiogenesis, and some studies also point to a role for placental growth factor, known as VEGF. The Eylea molecule is specifically designed for broad, strong, and long-lasting anti-angiogenic activity. The key to Eylea's advantage is its structural design and unique mode of action that is, unlike other alternatives, effective for neutralizing both VEGF and VEGF. The Eylea molecule is designed to bind or trap active VEGF and VEGF dimers in a 1-to-1 ratio, and this broad binding activity prevents the interaction of VEGF-A and VEGF with native VEGF receptors, thereby inhibiting key angiogenic signaling. Eylea is the only anti-angiogenic therapy that inhibits VEGF and all known isoforms of VEGF-A. Another key advantage for Eylea is that it possesses a higher binding affinity to VEGF-A than native VEGF receptors, and has also been shown to bind much more tightly to VEGF-A than ranibizumab. In fact, Eylea binds approximately 100 times more tightly than ranibizumab. Along with its high binding affinity, Eylea also has long-lasting efficacy when compared with alternative treatments. Ranibizumab suppresses intraocular VEGF for a mean of approximately 34 to 37 days in wet AMD and DME patients. Compare this to the Fowler et al. Data, which reported that Eylea completely suppressed intraocular VEGF levels for an average of greater than 71 days, almost twice as long as ranibizumab. The high VEGF-A binding affinity of Eylea, along with its longer half-life as projected through modeling, is the likely explanation for longer biological activity when compared to ranibizumab. The suppression of VEGF by Eylea demonstrated by the Fowler conclusion that the results suggest durable VEGF inhibition for most patients dosed with aflibercept every 8 weeks. Based on these studies, and also the results of major trials, we can affirm that Eylea is the only anti-angiogenic agent whose label allows for proactive dose extension by 8 weeks or more, in all indications with no loss of efficacy.
The advantages of a proactive treat and extend approach with long-lasting EYLEA are numerous, from potentially greater time between injection and monitoring visits compared to other therapies, and the anticipated positive impact on patient quality of life, reduction of the strain on clinic capacity, and related easing of the burden on the healthcare system. EYLEA's unique high binding affinity, dual mode of action, and longer biological activity suggest that EYLEA may be a preferred choice for the treatment of retinal disease. Thank you very much for sparing time, and I welcome my panelists for this VEGF Symposium, General Mother Ishaq Saab, Professor Amir Rahman Saab, and Professor Tariq Khan Saab, and Professor Qasim Latif Chaudhary Saab. These are the panelists for this symposium, and anyone have a question or want to know anything about IDEA, you are welcome, please. Because EYLEA is a unique molecule that also inhibits placental growth factor. Why unique? Because placental growth factor in DME is a major angiogenic that causes inflammation and hemorrhage. We can discuss at the end of the presentation. We will be discussing the same thing. Yes, but this is VEGF Symposium, so we have to go with that. So I will start with the first question and put to all the panelists. If you are injecting, say, for one pathology, DRVO, CRVO, or DAB, if it is EYLEA or Avastin or the other when would you swap to another one? And what would be your preferred choice? So when I switch, so whenever after 2 injections, there's no improvement in patient or OCT findings. That is my indication for shifting to other molecule. Up to 3 or 2? 2. So both के बाद में करते हैं, because we all know that all these anti-VEGFs they have got technical access. So that is what they stop responding. So अक्सर होता है कि वेस्टर्न के बाद ये इफेक्ट करना शुरू करते हैं या ये इफेक्ट नहीं करी तो वेस्टर्न लगाना शुरू करते हैं वो इफेक्ट करने के रहते हैं फिर वहाँ पे तो बेसिकली वेट कर ली एवेस्टिन ही इंजेक्ट हो रहा होगा ना, फिर आप कौन सी चॉइस होगी, EYLEA और पेटिजरा में? और मतलब बेसिकली ये है कि आप नॉर्मली व्हाट वी डू इन आवर practices Avastin was the most commonly used. So initially तो आपको 3 loading dose तो whatever drug I am using I will always use it for 3 times. This is I always tell my patient कि 3 से कम तो मैं किसी नहीं, I always give them 3 injections. And then over a period of time your preferences have changed. Initially जब हमारे पास तो choice ही नहीं होती, जब Avastin से आया then we had to go for तो Macugen जब आई थी it just came and just faded away by its own time. But then we had the chance of giving Lucentis or Pfizer जब भी कहते हैं. And then the advent of EYLEA, जितनी head-to-head trials आई हैं उसमें तो this have shown that the best results are being given by EYLEA. There is no doubt about that कि अगर आप vision improvement में आप देखते हैं तो because this was initially known as VEGF trap, the drug itself was known as VEGF trap और उस वक्त ये it was basically traps the anti-VEGF and then it's the long-lasting effect जिसे वो करती है. So if given a choice and if the patient can afford it, that is another very important question about this thing. So I would go for EYLEA. That is my choice. Sir, just the continuity of this question. Whenever you are making a switch from Avastin to, will you make the switch to straight to the patient is affording? Will you make the switch to Petisla or the EYLEA? Because theoretically EYLEA seems to be superior than Petisla. So what's the experience? Basically, if the patient is affording, I will going to start in the straight and not EYLEA. Let's take it that way. There is no question of. Can I
अभी खास तौर पे आजकल के ज़माने में जैसे अभी कासिम जी बड़ी अच्छी बताया कि अगर पेशेंट इज अफोर्ड करता है देयर इज नो क्वेश्चन एंड इफ ही सेज कि जी मुझे कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन अगर स्विच देखें ना अगर आपके पास चॉइस है ना देन यू गो फॉर दैट हाँ अगर आप वेस्टर्न में लगा रहे हैं एंड इफ यू हैव अफोर्ड इट देन आई विल स्टिल गो बिकॉज दिस इज व्हाट आई ट्रेन अभी कौन सी स्टडी से आपको मैं बताता हूं अगर हम डायबिटिक की बात कर रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रोटोकॉल टीम which has again shown कि जी इनिशियल जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्रोटोकॉल टीम में भी आप देखेंगे तो द बेस्ट रिजल्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जी they have shown कि जी western India has shown the best result among it. हाँ both and that is another thing कि अगर वो है ना कभी आपको दो चीजें आती हैं अगर उसमें अगर वेन वर्स वेन है तो दैट इज आल्सो द टर्म अगर आगे नॉर्मल वेन अगेन जिनकी नॉर्मल वेन है ओवरऑल स्टडी में अगर आप ओवरऑल स्टडी में भी देखें तो द फर्स्ट 2 years the best results were given by whatever the level of vein was because the vein in protocol T started from 6/9 till I think so I'm not wrong by 6/60 so there was a long huge group of the patients so इन सारों में इम्प्रूव की थी लेकिन अगर आप कहें कि जो वर्स वाले थे they improved in all the better किया था लेकिन best was So what is your personal experience when you switched? Yes, they do. I'm saying देखें अभी केस टू केस सिनेरियो होते हैं अभी जैसे रिफ्रैक्टिव की मैं बात कर रहा था कि लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज बिकॉज हम डायबिटीज ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज में रिफ्रैक्टिव के देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्विफ्ट आप किस वक्त चेंज कर रहे हैं लेकिन आपने दो चीज़ें देखनी वेन आपने ओसीटी की और आपने देखा कि उसकी आपकी प्लेसमेंट लेयर है ही कोई नहीं उसमें कुछ भी नहीं है तो देन देयर इज नो यूज ऑफ प्लेसमेंट लेयर नहीं है और आप जो मर्जी करते रहें तो वेन इंप्रूव नहीं करेगी उन जैसे केसेस में अगर आप करते रहें कोई देयर इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव बट इफ यू फाइंड इट ऑन ओसीटी the electrode layer is fine it is good enough and then you improve I would rather go for failure rather than important thing is that आप taking का mechanism क्या है I switch to idea why because in Benitizumab it is only the drug against VEGF it does not have an SC component वो receptor को block ही नहीं करेगा why the idea will block the receptors and it also block the placental growth factor जो उसमें नहीं है and in age-related macular degeneration आपका जो is better to go to idea rather than क्योंकि वहाँ blood vessels हैं उनको हमने ब्लॉक करना है उनको हमने करना है so we have to block the receptors वो Lucentis नहीं करेगा वो idea करेगी so I'll switch to idea Sorry? जी Yes, my question to the panelists is that IDEA has effectivity for about 70 to 75 days. But would you still like to do it on monthly basis as a loading dose? या इसको आप बाद में इसको 70 days के बाद यूज कर सकते हैं? I will always start them as a loading dose as a monthly. And it's only afterward if I see the response, and that has also been proved कि अगर response आपको है, then you start treating extend correction. Yeah, you can extend it and you can extend more in ideas compared to Lucentis. Yes. I think before switching to another anti-VEGF, it's very important to get to know about the pathophysiology. और मेरे ख्याल में सर ने कहा भी जब तक आप ये एक्सक्लूड न कर लें that this is only the drug resistance which is not allowing the drug to help the patient, उससे पहले आप ये मालूम कर लें कि कहीं इस पेशेंट को इस्कीमिया तो नहीं है कहीं इस पेशेंट में DRM तो नहीं है कहीं ड्रिल तो नहीं है कहीं एलिप्सॉइड लेयर तो डिस्टर्ब नहीं है after then you think about the drug resistance and you can switch to another Concept of tachyplex I think is not that more important as other scenarios the other things which are important in the treatment of the disease so tachyplexis I think I'm not sure it's there or it's not there. Dr. Abir want to add something? I think we have to keep in mind every disease is different. लोडिंग डोजेस का पर्पस होता है कुछ डिजीज में माइल्ड स्टार्ट होगा कुछ में मॉडरेट होगा कुछ में सीवियर होगा यू हैव टू गिव at least 3 so some people even suggest 5 loading doses that you keep on injecting until you get the
dry up of the fluid, as we're talking about in diabetic macular edema. And if patient is not drying up, even you continue further as well. The benefit of idea is that 3 to 5, if you have given, later you can move to 8 weekly. I think what Dr. Nadeem was asking about, initially it's better 3 to 5 injections. Later, yes, once you have done that, you can go to 8 weekly injections, and that's going to make a difference in diabetic macular edema. Wet AMD, even I have gone up to like 16 weeks, and I think later when I will present, I will discuss about that. So 16 weekly you can go, and the patient will have benefit due to idea. Thank you. My comment is mainly for juniors. When you are injecting, take all the precautions they would do for intraocular surgery. That means scrubbing, draping, washing, and then you inject. The problems occur when you take shortcuts, take the injections, and I just do it in operation theater, never in the clinic. And sir, consent. I have a patient who comes from very irritated macular degeneration of wet type की, तो उसको कंट्रोल हो गया है, तो वो वहीं से वो करवाता है ओसीटी और कहता है डॉक्टर मैं आ रहा हूँ इंजेक्शन लगवाने, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव इन बेरी, तो कहीं तो ओसीटी भी नहीं करता, नहीं डॉक्टर साहब मुझे विजन में प्रॉब्लम आ रहा है, अब लगा दें, मैं कल आ रहा हूँ, so I think he's addicted to idea. Idea has another plus point. Then in some cases, we are using Avastin, ranibizumab, and we at the end of after 2-3 months we come to that we are treating the polypoidal choroidal vasculopathy, PCV. So in those cases where the laser is not available, PDT is not available, Pakistan में available नहीं है, so it's a good option to do 2 injections and then send the patient outside for PDT. Thank you. Right, thank you very much on behalf of Beard Pakistan. And now it's over to Dr. Good, thank you, Veer. Now there's a small short tea break. We will resume hopefully in 15-20 minutes. We are slightly short of time. Tea is outside. Seniors are requested to go downstairs for tea.